take a candle first and I have a balloon. I have already blown this balloon. So what is inside this balloon? Air inside this balloon. Okay. अब आप सोचो अगर मैं ये कैंडल जो है वो लिट करती हूँ और उसके ऊपर ये बलून को होल्ड करती हूँ, what will happen to the balloon? Let's see. Yes, the balloon gets burst. But now I'm again going to do a magic trick here. Okay, so what is the magic trick? See, I'm again going to light this candle. See, but this time I have taken a different balloon. मैंने इस बार कोई दूसरा balloon लिया है. Now instead of air, what I have filled inside? It is very heavy. Water. The same water balloon which you used during Holi. क्या होगा अगर मैं ये वाला balloon flame पे रखती हूँ? Still nothing happened. Oh, और see balloon तो black भी हो गया. This is a see. It has become black, but still the water is not coming out and the balloon is not getting burst. You know the reason? Reason is कि रबर को जो है फूटने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, बट बिकॉज देयर इज कोल्ड वाटर इनसाइड इट और वो वाटर इस रबर के टेम्परेचर को उतना इंक्रीज ही नहीं होने दे रहा कि इट विल गेट बर्स्ट, एंड दैट इज व्हाई द फ्लेम इज नॉट एबल टू बर्न द सरफेस ऑफ द balloon, and that is why the balloon is not getting burst.